Welcome students. So in today's topic we will discuss about the force that is experienced by a charged particle when it moves in a magnetic field. Clear? तो उसके लिए we have taken a constant magnetic field that is B, जिसकी strength is given B, and let us take a charged particle that is a positive charged particle which will pass through the magnetic field, and we will find out that how do we find the force that is experienced by this charged particle when it passes from the magnetic field. Clear? So uske liye what we take, we have a rule that is Fleming's left hand rule. Fleming's left hand rule हमें क्या बताता है that if we align our first finger into the direction of the magnetic field, and thumb into the and this middle finger into the direction of current, so we can find out in which direction the force is being applied. It is simply like this. If I take this finger as in the direction of the magnetic field and this finger in the direction of current, then my thumb will give me the direction of the force being applied. So in the same case we have taken in this diagram also. So here also we have a magnetic field. So let us align this direction, our finger in the direction of magnetic field, and we know that the charged particle जो है it is moving in this direction. So we will align our first finger and our middle finger in the direction of the charged particle like this, right? And our thumb will point towards upwards. You can see our thumb is aligning in the upward direction. So we conclude that जो हमारा चार्ज पार्टिकल है दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इट विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, लाइक इन वो हमारी तरफ आ जाएगा टुवर्ड्स आवर साइड. So this is the first case of the positive charge. Now comes the case of the negative charge. अगर नेगेटिव चार्ज पास करे तो इन विच डायरेक्शन द फोर्स विल बी अप्लाइड, उसका केस करते हैं अभी, राइट? तो वी नो दैट बेटा जो करंट क्या होता है, इट इज़ सिंपली द फ्लो ऑफ दैट इज़ जो चार्ज होता है इट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास इन पर यूनिट टाइम, दैट इज़ द करंट. ठीक है, तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे मूव इन द डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव टर्मिनल, बट करंट की डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो पॉजिटिव चार्जेस का करंट जो चार्जेस का जो फ्लो है दैट इज़ द करंट, राइट? तो ऑपोजिट इसके था दैट इज़ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट. अगर हमने इस केस में करंट की जो डायरेक्शन है इट विल ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, लेट इट बी इलेक्ट्रॉन बिकॉज इस पर नेगेटिव चार्ज है. तो हमारे करंट की डायरेक्शन इस केस में हम कौन सी लेंगे, दैट विल बी ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इस केस में लेट अस टेक फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अदर फिंगर विल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो करंट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो इट विल बी लाइक दिस. उल्टा कर दिया मैंने हैंड को अपने को, लेफ्ट हैंड को. तो यू कैन सी माई फिंगर, जो मेरा थंब है इट इज़ अलाइनिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इट शोज़ दैट जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है इट विल मूव अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. जो हमारी तरफ पॉजिटिव चार्ज आया था बट जो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन है इट विल बी अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था तो वो हमसे दूर चला जाएगा, इट विल मूव अवे फ्रॉम अस. क्लियर? सो दिस इज़ हाउ डू वी फाइंड आउट द force that is experienced by a charged particle. Clear? I hope this is clear to you all. Okay.